श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 24। नभस्पृशदित्त अनेकवर्णं नभस्पृशदित्त अनेकवर्णं नभस्पृशदित्त अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशदीप्त अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशदीप्त अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशदीप्त अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। येथे आलेले नभस्पृशम हे पद विराट रूपाच्या अनंततेचे द्योतक आहे। अर्जुनाची दृष्टी जेथपर्यंत जाते तेथपर्यंत त्याला विराट रूप दिसत आहे, अर्थात तो परमात्मा सर्वांची परम अवधी परम गती आहे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। आता 25वा श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 25। द्रष्ट्रांकरालानि च ते मुखानि द्रष्ट्रांकरालानि च ते मुखानि दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि दिशेन जाने न लभे च शर्म दिशेन जाने न लभे च शर्म दिशेन जाने न लभे च शर्म प्रसाद देवे जगन्निवास प्रसाद देवे जगन्निवास प्रसाद देवे जगन्निवास दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि दिशेन जाने न लभे च शर्म प्रसाद देवे जगन्निवास दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि दिशेन जाने न लभे च शर्म प्रसाद देवे जगन्निवास दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि दिशेन जाने न लभे च शर्म प्रसाद देवे जगन्निवास। भगवंत तर प्रसन्न होऊनच अर्जुनाला आपले विराट रूप दाखवत आहे, परंतु त्यांच्या उग्र रूपाला पाहून अर्जुनाला भ्रम होत आहे की भगवंत अप्रसन्न आहेत, म्हणून त्यांना प्रसन्न होण्यासाठी प्रार्थना करतोय अर्जुन। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।